Hello students, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, we have started with our chapter fractions, and in our previous video we have also learned what is a fraction, what are the different types of fraction, and about the equivalent fraction. Now in this video we will learn about the addition and subtraction of the fractions, how we can go for addition and subtraction of numbers which are fractional numbers. Now we have already completed up to exercise 8.4, and now we will just see how we can do the addition and subtraction of like fraction. So already I have told you what is like fraction. Like fraction क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है, डिनोमिनेटर का जो नंबर होता है वो हर एक जो फ्रैक्शन हम लेंगे वो हर एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर विल बी सेम. The number with the same denominator are known as your like fraction. So now you have been given with two examples here. See, 2 upon 6 is one fraction and 1 upon 6 is another fraction, and they have shown you how you can add the two fractions. Now if you look to this fractional number, you can find that they have the same denominator. So these two fractions are like fraction. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो दोनों नंबर हमने लिया है उन दोनों नंबर में जो डिनोमिनेटर 6 है वो सेम है, इसीलिए हम इन दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. Now you have to go for addition of this like fraction. Now in example 3 you have been given with the numbers, that is addition of 2 upon 8 and 3 upon 8. So 2 upon 8 and 3 upon 8 में आप सबसे पहले क्या देखोगे, आपका डिनोमिनेटर सेम है, that means these two are like fraction. So you can easily add these two fractions. Now you can see here this 8 and 8. So what they have done, we have to take 8 as common. यहाँ पर एक ही 8 आपको डिनोमिनेटर में लेना है, और उसके बाद जो आपके पास न्यूमरेटर है that is your 2 and 3, that 2 plus 3 will give you 5. So you have to add the numerator. आपको दोनों न्यूमरेटर को ऐड करना है और डिनोमिनेटर को आपने यहाँ पर जो कॉमन 8 है वो से एक बार ही आपको यहाँ लिखना है, तो आपका आंसर आता है 5 upon 8. So this is how you do the addition of fractions. You have been given with the next example which has 3 fractional number. आपको यहाँ पर देखिए 3 फ्रैक्शनल नंबर दिए गए हैं, लेकिन ये तीनों फ्रैक्शनल नंबर लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर्स देखिए, the denominators of all the 3 fractions are same. That is why these 3 fractions are like fractions, and so you can easily add. तो आप एडिशन में देखिए क्या कर रहे हैं, हम तीनों नंबर को ऐड कर रहे हैं. तो जैसे कि आपने देखा कि तीनों के डिनोमिनेटर 14 है, तो हमने यहाँ पर 14 एज ए कॉमन डिनोमिनेटर वी हैव टेकन, एंड देन वी हैव जस्ट एडेड द न्यूमरेटर. जो ऊपर के नंबर्स हैं हमने उसे ऐड कर दिया है. देखिए 3 + 5 + 1. सो दिस इज़ योर सिंपल एडिशन. जो आप सिंपल एडिशन करते हो तो इस एडिशन से आपको कितना मिलता है, 5 + 3 + 1 विल गिव यू 9, and 9 upon 14 is your solution for this addition. Okay, so very easy it is. Now as you have seen the questions on your addition of fraction, now you need to also know about the properties of addition. में क्या करते हैं हम कि हमारे पास कुछ रूल होते हैं जिसे हमको फॉलो करना पड़ता है. तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 2 or more fraction can be added in any order. तो any order में
एनी ऑर्डर मीन्स यू कैन चेंज द प्लेस एंड यू कैन राइट द फ्रैक्शन। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए 1/4 + 2/4, दीज आर टू फ्रैक्शनल नंबर्स। तो हमने क्या किया है, 1/4 को पहले लिखा है और फिर हमने 2/4 को लिखा है, ठीक है। तो वाइल एडिंग अप यू कैन सी दैट, यहाँ पर देखिए 1/4 + 2/4 विल गिव यू व्हाट, common is 4 and 1 + 2 is 3, so you are getting the answer as 3/4. Okay, now according to property, if you change the place means देखिए 2/4 को पहले लिखा है और 1/4 को बाद में लिखा है हमने। देन अगेन इफ यू गो फॉर एडिशन, आप वापस एडिशन कीजिए, देन व्हाट विल हैपन, the solution whatever you are getting or the sum whatever you are getting is same। देखिए 1/4 को पहले जब लिखा था हमने तो भी हमको 3/4 एज ए सम मिल रहा था। अब हमने 1/4 को सेकंड लिखा है, फिर भी हमें 3/4 सोल्यूशन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इफ़ यू ऐड 2 और मोर फ्रैक्शन इन एनी ऑर्डर, द सम विल बी योर सेम। Okay, the result will be same. So this is one of the property. Now second property is when 0 is added to any fraction. So you can see here 0, ये एक fractional number है, उसके साथ हम 0 को add करेंगे, so you will get the number itself. Okay, so 0 when added to any fraction, we get the same fraction as the sum. Okay, so whenever 0 is added, we will get to a number, then we get the number itself. So anyhow 0 को आप यदि सेकेंड पोजीशन में ऐड किया तो भी आपको 7/11 मिला। यहाँ पर आपने 0 को फर्स्ट पोजीशन में लिखा है, फिर भी आपको सेम रिजल्ट मिला है। So there are two properties that you have to follow. Okay, then you have subtraction of like number. So as you know that subtraction means you have to do the minus, that is subtract 3/7 from 5/7। इस तरह के हमें questions मिलते हैं, देखिए। So what happens, after from whatever is the number, you have to write it first and then you have to subtract the other number from it. Okay, so subtraction of like fraction is similar, ये भी हमें same rule follow करना पड़ता है as our addition, only the difference is you need to subtract the numbers. ओके, तो सब्ट्रैक्शन में भी हम एडिशन का रूल ही फॉलो करते हैं, सिर्फ हमें जो भी नंबर्स हैं उन्हें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है इन प्लेस ऑफ एडिशन। ओके, सो सी हियर अगेन 3/7 फ्रॉम 5/7। तो आपको पता है हमेशा हम सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा होता है उस नंबर को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद ये इस नंबर को लिखा है। सिमिलरली देखिए डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन अ कॉमन डिनोमिनेटर। देन व्हाट वी डिड, द फर्स्ट न्यूमरेटर इज 5 एंड सेकेंड न्यूमरेटर इज 3। सो व्हाट वी डिड, वी जस्ट 5 minus 3 because it is a problem of subtraction, that is why 5 minus 3 we did, and we get the difference as 2/7, or the result is 2/7. Now if you have been given the example like this, देखिए यहाँ पर कैसे दिया है, 35/41 minus box 41 is equal to 14/41. So you have to take first the common denominator, that is 41. You need to write 35 minus box is equal to 14/41. Now what you have to do is, here 35 minus box is equal to 14. Okay, and since you know denominator जो है वो सेम है ना, इसीलिए हमको इसको इस डिनोमिनेटर के को ज़्यादा हम इसे ध्यान नहीं देंगे, हम यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इस पे ज़रा
ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है, देखिए डिनोमिनेटर तो हमें पता है 41 आने ही वाला है, बट व्हाट अबाउट दिस न्यूमरेटर? सो व्हाट वी हैव टेकन इज ओनली द न्यूमरेटर। यहाँ पे देखिए ये जो न्यूमरेटर का प्लेस है उसी प्लेस को हमने यहाँ पर लिखा है। Okay, so as we have written 35 minus box is equal to 14. Now you know that when the numbers have to be taken out and if one number is missing, then what you do, you have to change the place so that you can get the number. So what you can do is you are going to add a number so that you get 35. सो 14 में कितना ऐड करने से आपको 35 मिलेगा? 11 ऐड करने से। सो दैट इज़ वाई यू कैन गो फॉर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -11 विल गिव यू 14. ओके, सो दिस पार्ट यू नीड टू बी वेरी careful. So 11 plus 14. Why 11 plus 14? Because here you need the number 35 minus some number will give you 14. So you have to see 14 के बाद कौन सा नंबर आप करोगे तो 35 आएगा। तो what you will do, you will just go for 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Okay, so just see how much it is. So after going for 14, you have 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Now you see how many sticks we have made. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. It should be 21 so that we get 14. So here it should come as 21. तो यहाँ पे जो आपका नंबर्स दिए हैं इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो देखिए यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको लिखकर बताया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये नंबर्स जो आपके लिखे हुए हैं इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो दिस विल कम एज 21. ओके, तो यहाँ पर जो 11 लिखा है इसके बदले आपको यहाँ पर 21 लिखना चाहिए, तो ही आपको यहाँ 14 मिलेगा। ठीक है, सो जस्ट मेक दिस करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो गो फॉर करेक्शन। तो 35 minus 21 विल गिव यू 14. तो आपने इसे स्टिक बना के भी उसको प्रूव कर दिया है कि यहाँ पे जो भी आपका नंबर लिखा है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21. सो ये देखिए यहाँ पे किस तरह से हमने प्रिंटिंग मिस्टेक निकाल लिया है। इसी तरह हमें केयरफुल रहना है सम्स करने के समय। ठीक है, now as we have learnt about the rules of addition, we also have properties of subtraction, where you can see that whenever 0 is subtracted from a number, it gives the same fraction, that is the number itself. And second property is whenever we are subtracting two same fraction, then the result will be always 0. So you can see दोनों फ्रैक्शन सेम है, as we are subtracting it we are getting 0. So here also same thing, same fraction, we have subtracted the two same fractions, so we are getting 0.
Okay, so with this we complete off with explanation of addition and subtraction of fractions. Now here you have another thing, that is the word problem. So your next exercise will consist of this addition, subtraction and word problems based on fractions. So you can see वर्ड प्रॉब्लम, आपने वर्ड प्रॉब्लम तो बहुत सारे किए हैं, उसी तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम जो फ्रैक्शंस के हैं वो भी सिमिलर टाइप का होगा. हमें वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स, देन वी कैन प्रोसीड फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम करने के समय आपको हमेशा केयरफुल रहना पड़ता है. उसी तरह फ्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम के लिए तो आपको और भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड टू गो फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, सो एज वी विल गो फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. Okay, so let us move to our exercise. Now see the exercise 8.5. It is your addition problems, where you have here two fractional numbers, here also two fractional numbers, here 3 and 3 fractional number. So out of this I will show, मैं यहाँ से एक fractional number का सोल्यूशन करके बताऊंगी, और दूसरा वाला मैं आपको यहाँ पे 3 जो फ्रैक्शनल नंबर है इनका आपको एडिशन करके दिखाऊंगी, और जो रेस्ट जो है वो आप इजीली कर सकते हो, है ना. तो आप देखिए एडिशन का, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो है इसमें भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं. दैट ऑल्सो आई विल डू फॉर यू. Okay, few problems I will do for you, and rest you can go for your homework. Now see students, I have done question number 1, few problems from that. So first one is A is 3/4 plus 1/4. So you know that the denominators are same for both the fraction. So I have taken the common one denominator as 4, and then I have added the numerator. So you can see 3 plus 1. Okay, so 3 plus 1 will give you 4. Now here you can see that 4/4. So 4 and 4 gets cancelled out, and you get it as 1. Okay, so your final answer will be 1, because 4 and 4 both can be cancelled. Okay, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी you can see the denominators are same. That is why I have taken the common denominator, and then the numerators 4 plus 3 I have added this, and I am getting 7/10 as the solution. Then I have not done the C1. C1 is homework for you, so you can follow the procedure what I did for A and B. So I directly did the D problem, where you have 5/11 plus 2/11 plus 3/11. Here you can see 3 fractions. Now if you look to each denominator, you can find that denominators are common denominator, that is 11. So just write 11 here, and then add all the numbers which are there in the numerator. So 5 plus 2 plus 3. Okay, and add this 5 plus 2 plus 3, it will give you 10. So 10/11 is your solution. Okay, so like that you can go for E and F. E और F प्रॉब्लम आप इजीली कर सकते हो. कुछ उसमें क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर कॉमन लेना है, और ऊपर आपको नंबर्स को ऐड कर देना है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर एडिशन प्रॉब्लम. वी विल मूव टू सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज सब्ट्रैक्शन. Now see students, I did 3 questions for you. So first is A1. You can see that again the denominator is same. That is why I have taken here common denominator. And then 24 minus 13 will give you 11. यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम्स है, इसीलिए हमने माइनस साइन रखा है, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेम वे 16 is common denominator. So 9 minus 5 will give you 4. 4/16. Now you can see that the common factor can be your 4. So 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. 4 के टेबल में देखिए दोनों नंबर्स आते हैं.
तो फैक्टर्स में क्या होता है, हमें ऐसा नंबर का टेबल चाहिए जिसमें दोनों नंबर्स आते हैं। ओके, तो देखिए 4 के टेबल में 4 भी आता है और 16 भी आता है, इसीलिए 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16. Okay, now see here next question, where again you can find your common denominator as 22 and 13 minus 11 is the numerator what we have to subtract. Then 13 minus 11 will give you 2 upon 22. Now you can see ये दोनों numbers जो हैं ये 2 के टेबल में आता है, so 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22. That is why we can reduce it to the lowest term. Okay, so this is how we can go for rest of the questions. So जो भी आपको D E F जो questions दिए गए हैं वो आप easily इस तरह से मेथड फॉलो करके कर सकते हो, बहुत इजी है. Okay, so just do the rest 3 questions on subtraction. Now we will move to next question. Now next question is you have to fill in the boxes. So you have been given with this type of boxes here. Here you have to find out the number what it should be. Here this B question ये तो बहुत easy है, ये आप 20 minus 10 easily यहाँ 10 लिख सकते हो, है ना. तो ये तो आप कर लोगे, यहाँ पर भी आप कर लोगे क्योंकि 6 + 3 9 upon 13 ये भी बहुत इजी है. ये वाला बीच का नंबर आपको फाइंड आउट करना है. देन हियर ऑल्सो यू हैव टू गो फॉर द थर्ड फ्रैक्शनल नंबर, हियर ऑल्सो द फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर. सो आई विल गो फॉर A, D, E and F. मैं ये 4 सम्स आपको बताऊंगी, आप ये दोनों तो बहुत इजी है, ये आप कर सकते हो, ठीक है. Now see what I did. I have taken the common denominator 28 here and I have written the numerators. 13 plus box is equal to 21 upon 28. Now what I have written, take numerator. Take numerator means you have to take 13 plus box is equal to 21. So देखो मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर लिख लिया है. अब क्या करेंगे, अब हमको ये बॉक्स का नंबर ढूंढना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर आवर एडिशन. तो अभी देखिए यहाँ पे 13 है, तो आप कितने स्टिक्स डालोगे तो आपको 21 मिलेगा. देखिए 14 15 16 17 18 19 20 21. Okay, so just count it 1 2 3 4 5 6 7 8. So put 8 here. Okay, so put 8, so you can get 21. So now see 13 plus 8 is equal to 21. So we have to write, since 13 plus 8 is equal to 21, then we have to write ये वाला जो फर्स्ट जो स्टेप था वही हमें यहाँ लिखना है और बॉक्स में 8 लिखना है. So this gives you the missing number. Okay, so this is how you have to do the question. Now go for your D. सो जो बी और सी है वो तो बहुत इजी था क्योंकि आपको आंसर निकालने थे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है. अभी 14 upon 27 माइनस बॉक्स अपॉन 27. सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द कॉमन डिनोमिनेटर, देन यू हैव टू राइट 14, देन योर बॉक्स is equal to 6 upon 27. Now take the numerator. Now see, I have written the numerator. Now what number has to be added to 6? 6 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो हमें 14 मिलेगा. तो आप देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So just count it 1 2 3 4 5 6 7 8. So here also you have to write 8. Now see, again we have to go for, since 6 plus 8 already I have shown you how we got 8, so you have to write that. So again in the box you need to write 8. Okay, so this is how you have to go for the D question. Now see here,
you have been given with 3 fractional numbers and your answer is 8/9. So we have taken the common denominator. We just had written the numerator over here. Now take numerator. So in the numerator we are taking 4 plus 3 plus box is equal to 8. Now here you can see 4 plus 3 is 7 plus box is equal to 8. So when you are adding 1 to 7 you get 8. So it is very easy. So you can write here easily. So if you are adding 1 to 7 you will get 8. So you have got the missing number. So let us write. Now see how we have to write. So this is how we have to find out the missing number. Now here also you just have to go for common denominator. Then box minus 5 is equal to 5/19. Now take your numerator. Now see here we have taken the numerator. Now we know that from 10 if we subtract 5 we get 5. So easily we can write, since 5 plus 5 this number plus this number gives you 10. So we can write here the missing number as 10. So you have to write this way your answer. So with this we complete off with the third question. Now let us solve the word problems. Now let us read the word problems. So here is your first question. Mohit has 6 marbles out of which 2 are red. So in all Mohit had 6 marbles. मोहित के पास 6 marbles था और उसमें से 2 were red marbles. Okay, so what fraction of marbles are red? So out of 6 marbles 2 are red. So you have to write the fraction as 2/6. So 2/6 अगेन देखिए ये 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आता है तो you can go for 1/3. So the fraction you have to write 2/6 and as you go for calculation you are getting 1/3. So you can just write like this. Okay, now go for second question. Manvi has 11 pairs of hair clips. She gives 5 pairs to her sister. What fraction of clip does Manvi give to her sister? So Manvi के पास 11 pairs of hair clips थे और उसने 5 pairs अपने sister को दे दिए. So what was the fraction? Fraction will be 5 out of 11. So 11 total clips were there. Out of that 5 clips were given to her sister. So this will be the fraction. Now go for next one. 5 monkeys were sitting on a tree. One of them had a long tail. What fraction of monkeys had a long tail? So in all 5 monkeys were there and only one had a long tail. So you can write the fraction like this. Out of 5, one has long tail. So your fraction will be 1/5. Now let us go to next one. Rita takes a piece of ribbon that is ½ meter long and glues it on the side of a chart paper. She takes another ½ meter long ribbon piece and glues it below the first ribbon. Find the total length of the ribbon she glued on the chart paper. So Rita एक गर्ल थी, उसके पास क्या था? Piece of ribbon थे. Okay, so what she did, she took ½ meter long ribbon and she glued it on the side of a chart paper. तो देखिए रीता के पास इस तरह का चार्ट पेपर था. उसने एक रिबन लिया और उसने क्या किया, इसने यहाँ पर स्टिक कर दिया. ठीक है, so this is a ½ meter ribbon what she had glued. Then what, she took another ½ meter of ribbon and she glued it below the ribbon.
फर्स्ट रिबन। ओके, तो उसने और 1/2 मीटर का रिबन लिया और उसने क्या किया, उसे भी स्टिक कर दिया चार्ट पेपर में। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ ग्लू, टोटल लेंथ ऑफ रिबन शी ग्लूड ऑन द चार्ट पेपर। सो ये टोटल रिबन उसने कितने यूज़ किए वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 मीटर प्लस 1/2 मीटर that we will add. So just see how we have solved this word problem. So here Rita glued ribbon on the side of chart paper, 1/2 meter. She glued ribbon below the first ribbon, 1/2 meter. Total length of ribbon, you have to add this two. So we have added up the two fractions, 1/2 plus 1/2. So here you can see the common denominator, then 1 plus 1, and that is giving you 1. So therefore 1 meter ribbon was glued on the chart paper. Okay, so this is how you have to write the statements and you have to solve the word problem on fraction. Now let us go for E. Sania has 5/2 liters of juice. She drank 1/2 liter out of it. How much juice is left with her? So Sania was having this much liter of juice with her. She drank 1/2 liter. So how much is remaining? So here what you will do? You will subtract these two fraction. So let us write the statement and subtract it. Now see, total amount of juice 5/2 liters, amount of juice drunk by Sania 1/2 liters, amount of juice left. So these two fraction number we have to subtract it, and after subtracting we are getting 4/2, which can be further done as 2 liters. So 2 is the common factor, so यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4. Okay, now 2 liters of juice is left with Sania. So with this we complete off with exercise 8.5, and also we complete off with this chapter fractions. So go through all the questions properly and try to practice it. It's very easy, and please go through the statements of word problem and try to make your own sentences. Thank you.